Hi, welcome to part 2 of Vetic's journey. Here, we'll get to learn how Vetic got started, what were the key market insights that they saw, and how did they validate them. Now, let's get into the Vetic's journey. Let's go in detail. What did you see after Pristine Care? Let's start with the end of, let's say, Pristine Care journey, and then let's go in detail. What did you see in the market? What was the lacking? What was the calling that ended up with you and Gaurav and everybody to start this? How was the core team in detail in this? Yeah. So towards the end, when Gaurav kind of narrated this idea, what is the vision of Vetic? Vetic started because I personally had an issue with my pets. I think idea was very good. He was a very thorough person, kind of researched what has happened in US, what has happened in China, how quickly is India moving. So he had all those data points which kind of made sense. How is the contribution margin of the business? A brand which pet parents can trust will provide best-in-class medical service and convenience for pet-centered groups. One thing that was not there with us at that point of time is this a real problem or not? For that, you need to visit market, you need to speak to a lot of customers, you need to understand from current doctors and current clinics. So we spent almost 1 month visiting all the clinics in Gurgaon, Delhi, Noida. Right, we must have visited almost 150 to 200 clinics to understand who are the current players. सबसे पहले what kind of doctors are there in the market, what is the kind of infrastructure that is there currently, right? What is the kind of average revenue that a store does currently, उसके अंदर various service lines से कितना कितना आता है, right? उसमें different doctors से discussion की. Second, lot of customer service. We created a almost 50 questions लंबा question है, उसमें से और narrow down करते गए so that it was easy for us to survey customers. Spoke with almost 150 to 200 pet parents to understand what's their psyche, how do they see the current market, and will they accept a product like Vetic. So उससे काफी confidence आया. I think So did you, this is sorry to interrupt here. How did you go to these customers? Did you actually go to these veterinary clinics या कहाँ कैसे उनसे आप मिले and कहाँ ये चीज पूरा आपका जो ये customer analysis bed कहाँ ये हो रहा था? Is it in Gurgaon or where did you start this? so all these things we did in Gurgaon और Delhi, Noida में किया. So how did we find all the clinics? So simply Google पे search किया clinics near me, pet clinics near me, जितने मिले data, देखा कौन से टॉप रेटेड है, किस पे ज्यादा नंबर ऑफ रिव्यूज है, वहां गए. उन पे भी गए जिनके रिव्यूज रेटिंग्स खराब थे, कि समझने के लिए कि भाई मार्केट कैसा है. तो डिटेल में वहां पे किया. कस्टमर्स में लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड कनेक्शंस हैड पेट पेरेंट्स, तो उनसे बात करी. सो दे एंटरटेन्ड अस मोर, राइट. फिर अपने विजिट्स के दौरान कुछ कस्टमर से बात करी. तो उस टाइप में था. किस टाइप के क्वेश्चंस थे? They were descriptive questions. What were the kind of answers that you saw and what did you analyze? Right, let's get into the detail of या like questioning या the customer thing. या सो उसमें सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अंकित, जो हमारा हाइपोथेसिस था, आवर हाइपोथेसिस वाज वेरी क्लियर. करेंटली the quality of infrastructure and the quality of treatment is not up to the mark. This is what was our founder's first impression when he struggled with his pets. So first was the validation on these questions कि बॉस कैसा है ये मार्केट. देन फिर उसके बाद थोड़ा ये समझना कि यार स्पेंडिंग पैटर्न कैसा होता है कस्टमर का. डज ही एक्चुअली कितना स्पेंड करता है मंथ में. डज इट मेक सेंस फॉर अस टू गेट इनटू दिस बिजनेस और नॉट. तो दो चीजें थी. एक तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो हमें लगा उसको वैलिडेट करने की ट्राई करी, और सेकंड थ्रू वेरियस क्वेश्चंस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ पे पैसा खर्चा करता है पेट पेरेंट एंड हाउ मच डज ही कॉस्ट, सो दैट व्हेन वी आर ओपनिंग अ बिजनेस हम कितना शेयर ऑफ वॉलेट ले पाएंगे ये हमें समझ में आएगा. तो ये इन्हीं बेसिस पे क्वेश्चंस थे. I see. And किस टाइप के आंसर्स मिले? एंड ऑल्सो लेट्स डाइग्रेस इनटू जो आप बोल रहे हो ना, जो स्टोरी है गौरव का अपने पेट के साथ, वो क्या स्टोरी है? सो पहले वो बताता हूँ आपको किस टाइप के आंसर्स मिले. सो आंसर्स वर वेरी इंकरेजिंग. सो अंकित इसमें एक तो हमारा डेटा हमें थोड़ा वो लगा था कि मे बी द काइंड ऑफ कस्टमर्स दैट वी आर टॉकिंग टू इज अ बायर्स डेटा बिकॉज दे हैव गुड स्पेंडिंग पावर. तो इसमें थोड़ा और इसलिए वी काइंड ऑफ स्पोक विद डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर्स जो कि हमारे नोन नहीं भी थे. तो उसमें ये समझ में आया कि ऑलमोस्ट 50-60% ऑफ द कस्टमर्स treat their pet as their kid. That was clear. मतलब our business was not comparable to say the business of Max, Medanta, Apollo. It was more comparable to say Cloud9, Mother Child, इस टाइप की जो हॉस्पिटल चेन्स है इसमें, वेयर आप उस बिजनेस में हो जहाँ पे कि बच्चे के साथ आप ट्रीट कर रहे हो, पीडियाट्रिक वाले बिजनेस में हो आप.
तो वो हमें समझ में आया कि इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव रिलेशनशिप दैट दे हैव विद द पेट. तो वो थी वहां से अंडरस्टैंडिंग. नाउ कमिंग टू द जर्नी ऑफ गौरव जर्नी, हाउ वाज इट? सो ही बॉट पर्शियन कैट. सो क्या है कि इंडियन मार्केट, अंकित, इट्स 85% डॉग, 15% कैट. तो कैट स्पेशलिस्ट आर वेरी फ्यू, राइट? मार्केट छोटा है, तो हर किसी की कैपेबिलिटी रहती नहीं है. एंड प्लस व्हेन यू बाय अ पेट फ्रॉम अ ब्रीडर, इस जर्नी को आप समझना अंकित, जो आप ब्रीडर से खरीदते हो ना, इट्स अ वेरी डाइसी थिंग. मतलब देर इज नो ऑथेंटिसिटी की व्हाट काइंड ऑफ पेट यू रिसीव. इज ही वैक्सीनेटेड, इज ही फिट, इज ही हेल्दी? नोबडी नोज. सो यू काइंड ऑफ बाय, यू काइंड ऑफ गेट अ पेट, आप ले आए. फिर ही फेस मल्टीपल हेल्थ इश्यूज, राइट? स्किन इन्फेक्शन हुआ, डायरिया हुआ, मल्टीपल चीजें हुई. काइंड ऑफ विजिटेड मल्टीपल क्लिनिक्स. द क्वालिटी इन द कंसल्टेशंस वाज नॉट up to the mark. Doctor was not able to explain what is happening. He was giving injections and medications. Finally, after 5-6 visits to different clinics, he got hold of one of good vets in Gurgaon. He kind of helped his cat recover, and then that's what gave him the belief that the opportunity is there. वो थी वो जर्नी. Is it because of this that you started all the analysis and everything in Gurgaon, or did you actually analyze कि भाई इंडिया में कौन कौन से cities में ये चीज हो सकता है? And how did you figure out कि कितना बड़ा market है, right? Like you said like कि भाई एक customer average कितना पे करता है, Yeah, right? That's yeah, yeah. important. But again, like at the end of the day, अगर market size देखना जाए चाहे तो पर कस्टमर इनटू हो जाएगा, राइट? कितने कितने कस्टमर्स Yeah. है, तो वो मार्केट साइज कैसे फिगर आउट किया कि ये सही में बड़ा मार्केट है कि नहीं जिसको अपन अटैक कर सकते हैं? Yeah, yeah. Okay, we saw 3-4 data points, Ankit. One was kind of 3-4 guesstimates. एक था from a supply side कि how many clinics are there in India, right? In the top 10 cities. पहले वो मैथ्स करी. निकाला कि average how much should a clinic do based on our math. Took a very conservative number. एक मैथ्स आया. Then we kind of did second maths to understand कितना number of pets दिखता है आज की डेट में मीडिया में, which is a very conservative number. उससे एक मैथ्स करा कि हाउ मच पेट पेरेंट स्पेंड्स ऑन देम, उससे निकला एक मैथ. देन वी गॉट डेटा ऑफ सम ऑनलाइन प्लेयर्स, हाउ मच आर दे डूइंग, राइट, पेट फूड में. उसमें फिर वी काइंड ऑफ अंडरस्टूड पेट फूड में ऑनलाइन इतना होता है, ऑफलाइन इतना होता होगा, पेट फूड एज अ सेक्टर इतना करता होगा. सो बॉलपार्क हमें समझ में आया कि दिस इज अ रफली अभी फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव माइंडसेट $2 बिलियन का मार्केट इंडिया में समझ में आता है. सेकेंड चीज जो हमें समझ में आती है ना अंकित, आई हैव बीन विद प्रिस्टीन केयर सर्जरी इज अ बिग मार्केट, राइट? बिग मार्केट. हर बंदा अपने लाइफ टाइम में एक सर्जरी तो करा ही लेता है. बट पॉइंट इज देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन, देयर आर लॉट ऑफ ऑफलाइन प्लेयर्स. तो वी डिड नॉट जस्ट लुक एट द मार्केट साइज डिसेंट है, मतलब $2 बिलियन का है, बट कॉम्पिटिशन नहीं है. पॉइंट इज देयर आर नो ब्रांडेड प्लेयर इन इंडिया. एनीबडी हु हैज मोर देन 10 clinics, there is no single player. So we felt कि it's a maths wherein मार्केट कितना बड़ा, आप कितनी डेप्थ बना सकते हो. तो उसमें हमें लगा कि यार इट्स अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी. तो वो मैथ्स करके वी देन डिसाइडेड टू टेक द प्लान. ऑल्सो बिकॉज मैं यूएस में रहा हुआ हूँ, आई हैव सीन लाइक एवरीबडी हैज अ पेट एंड दे एक्चुअली ट्रीट इट एज दैट किड, राइट? या एज यू सेड. सो या एसेंशियली मार्केट साइज जो आपने देखा कि इट्स ये एंड इतना यू कैन कवर एंड एवरीथिंग, राइट? हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस एनालिसिस, द होल, फर्स्टली लाइक द इंटरव्यूइंग कस्टमर्स एंड देन फिगरिंग आउट ऑल दीज मार्केट साइज एंड एवरीथिंग? हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस? बिकॉज मैंने काफी बार देखा है कि लोग दे जस्ट थिंक कि ये कर सकते हैं एंड देन दे स्टार्ट. Do you think this evaluation thing, whatever you and your team did, right, is important or not? आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. आई थिंक आइडिया आना, राइट? आइडिया आना, उसमें यू काइंड ऑफ गेट स्वेड अवे एंड यू काइंड ऑफ परस्यू इट without doing proper research. Then lot of your biases are inbuilt, right? You have not kind of challenged the idea. Better ये रहता है before starting, before taking such a big decision, you should always get your idea challenged through multiple data points. I think first is आप ये चेक करो कितना बड़ा मार्केट है. Are you even solving a problem that is big enough? Second, key, is your idea scalable? Can you do it across India? Third है, does this business make sense? At a unit economics level, does it make sense? इसका सिंपल मतलब है, आप अगर इसमें ₹1 लगा रहे हो, आप कितने रुपए कमाओगे? और इसमें बस वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड करके आप कितने कमाओगे. फिक्स कॉस्ट तो चलो आप ओवर स्केल उसको करते हो बिल्ट इन. तो ये तीन चीजें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है. एंड उसके अलावा जो मैंने आपको बोला कि
पूरी मार्केट रिसर्च करना, कस्टमर से बात करना, वो है प्रोडक्ट मार्केट फिट जानने के लिए. तो इसके बिना तो आई थिंक इट्स अ क्राइम टू इवन थिंक ऑफ ओपनिंग अ बिजनेस. So let's go into कि भाई पहले who were in the core team and how did you figure out okay कि I think you are designing a 360-degree model, right, around pets and trying to make a brand across India, right? तो कैसे figure out किया okay these are the pain points that we are going to touch first because it's a big thing, like you can't do everything at once. Like how did you identify those things? Correct, correct. So in any business that you open, Ankit, problems are plenty, right? Someone who wants to operate business successfully and बिल्कुल अच्छे से करना चाहता है, focus is super important. मतलब what is one problem that I want to solve, because आपके पास limited resources होते हैं, limited time होता है, and you want maximum impact. वहाँ पे it's always very very important to kind of decide your focus area. तो हमारे को ये क्लियर था कि यार पेट स्पेस में फूड भी है, इंश्योरेंस भी है, एक्सेसरीज भी है, देन देयर इज हेल्थ केयर वाला साइड. तो हमारा एक माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था कि वी वांट टू बी अ हेल्थ केयर ब्रांड. हम वी वांट टू ओपन आवर ओन चेन ऑफ क्लिनिक्स which kind of solves for two things: knowledge gap and standardized medical treatment. ये दो स्टेटमेंट हमें क्लियर थे इसके लिए, और इसमें क्लियर था कि इसके अराउंड ही बिजनेस अभी बिल्ड करेंगे, 1-2 साल तक और कहीं नहीं देखेंगे, फोकस से बस इस पे काम करेंगे, बिकॉज दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम. और इसमें हमारे को ये क्लियर था वी कैन नॉट ऑपरेट ऑन अ मार्केट प्लेस मॉडल बिकॉज द करंट ऑफरिंग इज एट अ वेरी वेरी सब पार लेवल, एंड आर एंटायर स्टार्ट पॉइंट इसकी हम इससे बेटर है. तो उसके लिए हमें तो खुद का खोलना पड़ेगा, राइट? उसके अंदर हमें वी वर ऑल्सो क्लियर दैट to for it to make a business sense you need to offer all solutions under one roof, तभी कस्टमर आपका रहेगा. फॉर एग्जांपल, सो हाउ वी ऑपरेट करेंटली इज वी हैव आवर ओन सेट ऑफ डॉक्टर्स इन अ क्लिनिक, राइट? यही हमारा थॉट प्रोसेस पहले भी था कि अपने खुद के डॉक्टर रखेंगे, उससे you have better control over what's happening between a doctor and a patient. You can train him, you can guide him, you can make you learn multiple things. And for giving proper medical care, we provide in-house diagnostics, in-house surgery capabilities, in-house complex treatment capabilities. And apart from that, we have a pet shop because we don't want customers जो कि food के लिए आ रहे हैं, medicines के लिए आ रहे हैं, वो कहीं और जाए. तो ये हमारा clear था कि we want to give this as an offering. Now, coming to second question, Ankit, regarding the team. As you know, when you're starting, you cannot hire through the normal routes. जहाँ पे कि आप you go to a job portal, ढूंढ लिया. सबसे पहले people, the prospective employee will ask you, who are you? And plus आपको वो constraints भी होता है, you can't pay salaries, high salaries आप दे नहीं सकते हो. You want people on job cut, you want people who are aspirational, people who are very hardworking, who are trustworthy. Multiple challenges होते हैं. तो you always go through references. आप उनको ही लाते हो जिनको आप जानते हो. We were lucky कि हमारा नेटवर्क अच्छा है. So there are 2 or 3 of my friends who I managed to get into Vetic at substantial pay cut. Right? They were also convinced with the idea. They met Gaurav. They liked the idea. They liked the team. तो वैसे करके ही हमने initial team build करी अंकित. Even at execution level भी I got folks from my previous companies who were good, who were hungry, so they also knew how we operate. फिर वो trust भी रहता है. We were able to push people in the right direction. So we hired through our references. I hope you learned something from this. And if you did, then like, share, and subscribe to this channel. The last part of Vetic's journey will be out soon, so stay tuned.